Hello students, I welcome all of you in KENE'S Educare. Today we are learning about surface areas and volumes. These chapters from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स देखिए आज हम देखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन अ सेक्शन 13.2 वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स दैट आर फॉर्म व्हेन टू बेसिक सॉलिड्स वेर जॉइन टुगेदर करेक्ट. Let us now do something different. We will take a right circular cone and remove the portion of it. Okay, मतलब हमने यहाँ पर एक कोन लिया, उसका एक पोर्शन हमने यहाँ से कट कर दिया. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक अगर ये कोन बनता है तो इसका ये पोर्शन हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर जो शेप बन जाता है उसे हम फ्रस्टम कहते हैं. देयर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन डू दिस, बट वन पर्टिकुलर केस दैट वी आर इंटरेस्टेड इन टू रिमूवल ऑफ अ स्मॉलर राइट सर्कुलर कोन बाय कटिंग द गिवन कोन बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. You must have observed that the glasses मतलब tumblers in a general use for drinking water area like this shape. Okay, so given cone, when we slice through it with a plane parallel to its base and remove the cone that is formed on one side of that plane, the part that is now left over on the other side of the plane is called frustum of the cone. Okay, तो यहाँ पर देखिए इसे क्या कहा जाता है, फ्रस्टम ऑफ द कोन. फ्रस्टम इज लैटिन वर्ड मीनिंग पीस कट ऑफ एंड इट्स प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्रस्टा. Now can we find the surface area and the volume of frustum of cone? Let us explain it through an example. So example देखिए यहाँ पर the radii of the ends of frustum of the cone 45 cm, high are 28 cm and 7 cm. Find its volume and the curved surface area and the total surface area. So यहाँ पर क्या करना है आपको, the frustum can be viewed as a difference of two right circular cones OAB. दिख रहा है आपको, yes OAB यहाँ पर दिख रहा है, and OCD. Let the height in centimeter of the cone OAB with BH1 and slant height L1. OP is equal to H1, OA is equal to OP is equal to L1. Let H2 is be the height of the cone OCD and L2 is the slant height. We have R1 is equal to 28, R2 is equal to 7 centimeter. And the height of the frustum is equal to 45 centimeter. So H1 is equal to 45 plus H2. So we first need to determine the respective heights H1 and H2 of the cone OAB and OCD, since the triangles OPB and OQD are similar. Okay, so H1 by H2 is equal to 28 by 7 is equal to 4 by 1. So from 1 to we have get H2 is equal to 15, H1 is equal to 60. नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अंत में यहाँ पर एक फार्मूला मिलने वाला है, तो आप डायरेक्टली फ्रस्टम के लिए यूज़ कर सकते हो, तो हम देखेंगे आगे वाले पार्ट में. So now the volume of the frustum is equal to volume of the cone OAB minus volume of the cone OCD. So we get 48,510 centimeter cube. The respective slant height L2 and L1 of the cones OCD and OAB are given by L2 is equal to in रूट 7 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर जो आता है 16.55 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली. तो L1 इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इन रूट में, तो 4 इन ब्रैकेट 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो वी गेट 4 मल्टीप्लाई विथ 16.55 इज इक्वल टू 16.20 सेंटीमीटर. Thus the core surface area of the frustum pi r L1 minus pi r L2 pi r 2L2. तो 22 by 7, 28, 66.20 minus 22 by 7, multiply with 7, multiply with 16.55. So we get 5461.5 centimeter square. Now the total surface area क्या हो जाएगा, the curved surface area plus pi r1 square plus pi r2 square. तो 5461.5 plus 22 by 7 multiply with 28 का square plus 22 by 7, 7 का square. So we get 8079.5 centimeter square. Let H be the height, L be the slant height, and R1 and R2 the radius of the ends of the frustum where R1 is greater than R2. Then we can directly find the volume, the curved surface area and the total surface area of the frustum by using the formula. Okay, तो ये तीनों भी फॉर्मूला आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, यही आपको यूज करना है डायरेक्टली टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस फ्रस्टम क्वेश्चंस. ओके, द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन 1/3 pi h r1 square plus r2 square plus r1 multiply with r2. The curved surface area of the frustum of the cone pi in bracket r1 plus r2 multiply with L, where L is equal to in root h square plus r1 minus r2 bracket square.
Total surface area of the frustum of the cone is equal to pi L in bracket R1 plus R2 plus pi R1 square plus pi R2 square, where L is equal to h square plus in bracket R1 minus R2 ब्रैकेट का स्क्वायर. तो जस्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर यही फॉर्मूला अगेन यूज करना है और यहाँ पर वैल्यू डाल के आपको आंसर निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है. यही तो क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर निकल जाते हैं इस तरीके से. दिस फार्मूला कैन बी डिराइव यूजिंग द आइडिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बट वी शैल नॉट बी डूइंग डेरिवेशंस हियर. लेट अस सॉल्व एग्जांपल 12 यूजिंग दिस फार्मूला. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला में वैल्यू डालिए, वी गेट 48,510 एंड वी हैव एल इज इक्वल टू 49.65 सेंटीमीटर. कितना आसान था ना यहाँ से, करेक्ट. तो सो कर सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म 5,461.5 एंड टोटल सरफेस एरिया 8,079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, लेट अस अप्लाई दिस फार्मूला इन सम एग्जांपल्स. तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, खुद से ट्राई सॉल्व करने का प्रयास करिए. हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगम्मा आर बिजी मेकिंग जैगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस. दे हैव प्रोसीड टू शुगर केन जूस टू मेक molasses which is poured into molds in the shape of frustum of a cone having the diameters of its two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter. And the vertical height of the mold is 14 centimeter. If each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 grams, find the mass of the molasses that can be poured into each mold. So take pi is equal to 22/7. So since the mold is in the shape of the frustum of cone, the quantity volume of molasses that can be poured into it, so pi by 3 h in bracket r1 square plus r2 square plus r1 multiply with r2. वैल्यू डालिए फॉर्मूला में ओनली एंड वी गेट 11,641.7 सेंटीमीटर क्यूब. It is given that 1 centimeter cube of molasses has mass 1.2 grams. So the mass of molasses that can be poured into each mold क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है बाय 1.2 से, तो वी गेट 14 kg approximately. An open metal bucket is in the shape of frustum of a cone mounted on a hollow cylindrical base made of a same metallic sheet. The diameter of the two circular ends of the bucket are 45 centimeter and 25 centimeter. The total vertical height of the bucket is 40 centimeter. That is, the cylindrical base is 6 centimeter. Find the area of the metallic sheet used to make the bucket, where we do not take into account the handle of the bucket. Also find the volume of the water of the bucket can hold. Okay, मतलब surface area निकालना है, वॉल्यूम निकालना है. So सबसे पहले therefore slant height of the frustum L is equal to हमने निकाल लिया, तो वी गेट यहाँ पर h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, तो वी गेट 35.44 सेंटीमीटर. The area of the metallic sheet used is equal to curved surface area of the frustum of cone plus area of the circular base plus curved surface area of the cylinder. तो वी गेट यहाँ पर जस्ट वैल्यू में फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, तो पाई मल्टीप्लाई विथ 35.44 इन ब्रैकेट 22.5 प्लस 12.5 प्लस पाई मल्टीप्लाई विथ 12.5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई मल्टीप्लाई विथ 12.5 मल्टीप्लाई विथ 6, तो वी गेट 4,860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट बकेट कैन होल्ड, क्या फॉर्मूला यूज करना है, पाई मल्टीप्लाई विथ h बाई 3 मल्टीप्लाई विथ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 मल्टीप्लाई विथ r2. तो यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई विथ 34/3, तो 22/5 का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर, 22.5 मल्टीप्लाई विथ 12.5, तो वी गेट 33,615.48 अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 33.62 liters. So students, what we learn in this chapter, we have studied the following points that determine the surface area of an object formed by combining any two of the basic solids, namely cuboid, cone, cylinder, sphere and hemisphere. To find the volume of objects formed by combining any two of the cuboid, cone, cylinder, sphere and hemisphere. Given a right circular cone which is sliced through by a plane parallel to its base, then the smaller conical portion is removed. The resulting solid is called a frustum of a right circular cone. The formula involving the frustum of cone are: volume of frustum of cone is equal to 1/3 pi h in bracket r1 square plus r2 square plus r1 multiply with r2. Curved surface area of the frustum of cone is equal to pi l in bracket r1 plus r2, where l is equal to h square plus r1 minus r2 का square. Total surface area of frustum of cone is equal to pi l r1 plus r2 plus pi in bracket r1 square plus r2 का square, where h is equal to vertical height of the frustum, l is equal to slant height of the frustum, and r1 and r2 radii of the base
टू बेसिस एंड्स ऑफ द फ्रस्टम। ओके, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर, कर सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको, एंड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम आपको, टोटल सरफेस एरिया आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर नंबर जो चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यहाँ पर ही एंड होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।